This summer, meet the magical mermaid at VGP Marine Kingdom from April 12th to May 31st. In West Bengal, political rivalry stands out as a different ballgame as compared to other states. It's a tough landscape where constituents of India bloc are acting as rivals and each candidate has to battle it out for victory on their own, as seen with Chaudhry, who is fighting his own battles. এটা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই দৃশ্য আমরা দেখতে থাকবো, কারণ তৃণমূল দল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং লোকসভা নির্বাচনের যখন জোটের রেজাল্ট ভালো হবে, তৃণমূল দল তত বেশি করে করে এই বাংলায় তাদের ভাঙন অব্যাহত হতে দেখবে। তৃণমূল দল আগামী দিনে উঠে যায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা রাজনীতি করছি এবং করব। TMC Supremo Mamata Banerjee has assured her support to the India bloc to form the government at the centre, while the Congress High Command has stated that their doors are always open for alliances. However, it's not as easy for Chaudhry, who is in a direct fight with TMC candidate Yusuf Pathan. The senior Congress leader from West Bengal is battling to retain his Berhampur Lok Sabha seat, which he has held since 1999. For him, opposing the TMC is mandatory as the two parties are battling it out against each other in the poll fray, and CM Mamata Banerjee has explicitly urged voters not to support Congress in the state. Though still part of the India bloc, the TMC chose to go it alone in Bengal. The Congress and the Left Front have a seat sharing arrangement in the state, with the left parties contesting 30 seats and the Congress contesting the remaining 12. Chaudhry, being the face of Congress in Bengal, has been facing the heat of this friction. Just a month ago, his convoy was stopped in Murshidabad by TMC supporters raising "Go Back" slogans. The police attempted to intervene, leading to an altercation. Fed up with the repeated conflicts with the TMC, Chaudhry called out Mamata Banerjee, saying she cannot be trusted as she distanced herself from the India bloc and could potentially join hands with the BJP. मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। His remark, however, drew strong reaction from Congress chief Mallikarjun Kharge. अब ममता जी पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले तो 2004 में, तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट। अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। However, Chaudhry did not back out. আমার বিরোধিতা নৈতিক বিরোধিতা, কংগ্রেসকে কেউ খতম করবে আমি তাকে খাতির করবো তা তো হতে পারে না। আমার বিরোধিতার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই, আমার বিরোধিতা নৈতিক বিরোধিতা, আমার বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গে আমার পার্টিকে রক্ষা করার জন্য লড়াই। এই লড়াই আমি কোনোভাবেই থামাতে পারি না, কারণ আমি পার্টির একজন ফুটসলজার। Caught between state level rivalry and national level politics, the senior Congress leader has the mandate to defend the party and ensure its success in the state amid duplicitous approach of the TMC, whose primary goal is to maintain its hold on West Bengal. This summer, meet the magical mermaid at VGP Marine Kingdom from April 12th to May 31st.